Chalo, so good morning. Those who are live, those who are on the YouTube, just share the screen and the audio. Okay, write your name in the chat box so I can understand you can present it. Okay? So today we'll start with the new section, that is of parallel magnetic circuit. In the last lecture, we देखा था what are the basic definitions under the magnetic circuit. So whether it is a magnetic flux density, magnetic flux strength, reluctance, permeability, all the things. Then हमने start किया था what is a magnetic circuit and electrical circuit का comparison. And then magnetic circuit में दो types होते हैं, series and parallel. So in the last lecture we completed series section. Today we start with the parallel magnetic circuit. Once we're done with the parallel magnetic circuit, we'll see the difference between series and parallel magnetic circuit. Just share the video with others so they can also join. We'll start with the parallel magnetic circuit. Simple concept है, same as electrical circuit. जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, सेम सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा. ठीक है, चलो. सो विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स सो अदर्स कैन जॉइन. विल कंप्लीट दिस सेक्शन. चलो इमीडिएटली. So if you have any doubt, you can use the chat box. Okay, याद रखो. इसके ऊपर जितने सम्स थे हमने ऑफलाइन लेक्चर में लिए थे, but we'll take the one more session on the all type of the sums based on the model one. ठीक है, so don't worry. जिन्होंने मिस किया, for them we'll take the online lecture, so they can go through this sums at any point of time. This topic is very easy. It's 50% mathematical और 50% theory. So दोनों इसमें स्कोर करने का चांसेस ज्यादा है. तो सेकंड मॉड्यूल में क्या था? सेकंड मॉड्यूल में मोर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल, थर्ड मॉड्यूल आल्सो बेस्ड ऑन मोर मैथमेटिकल. तो उसमें अगर वो सम्स नहीं है तो कुछ नहीं आएगा. लेकिन इसमें थोड़ा सम्स वीक है लेकिन थ्योरी ज्यादा है, देन आल्सो यू कैन स्कोर. सम्स अच्छा है लेकिन थ्योरी कम है, देन आल्सो यू कैन स्कोर. तो बोथ आर बैलेंस इन दिस चैप्टर. Then just only 12 pages का notes है, उसमें से आने वाला. Okay, so if you follow this 12 notes, 12 pages का notes and sums based on this chapter, you can easily score. Sure. So we have Omkar, Shivam, Tanishka, Mandar, Krishna, then Aditya, then Saish, Rachit. चलो, let's start with the parallel magnetic circuit. Okay. इसके पहले we should know what is a electrical magnetic circuit. तो यहाँ पे एक नीचे डायग्राम दिया, we'll follow the diagram. From that diagram we'll understand what is a parallel magnetic circuit. So let's see the diagram. So see this one. So this diagram is based on electrical magnetic circuit. This diagram is based on electrical magnetic circuit. तो यहाँ पे क्या दिया है? There is a 3 resistors, R1, R2, R2. Okay? And all 3 are connected in parallel. और यहाँ पे एक बैटरी लगाया. This is a battery. This is an EMF, you can say. And from this battery there is a current is flowing. तो current कैसे flow है? Positive side से negative. तो जहाँ से जो current pass हो रहा है, that is a total current. ये current ये point पे divide हुआ. So that means this point is known as the junction. जिस पॉइंट पे करंट डिवाइड हुआ, that point is known as junction. देखा था इनिशियल लेक्चर. So current I is divided into two parts, that is the I1 and I2. What is the concept in parallel? Which electrical quantity get divides? That is the current. Because यहाँ पे junction use होता है, use a KCL law. So the current gets divided into I1 and I2. Same. अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है तो मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं? इट इज अ फ्लक्स. जो कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे करंट पे हो रहा है, सेम इफेक्ट यहाँ पे फ्लक्स पे होगा. द इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट इज डिवाइड, तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा? फ्लक्स.
कैसे? Let's see. So this is the one metal. This is the one metal. We can consider this is metal 1 and this is metal 2. ये second metal. This is first metal. This is second metal. Both are connected in parallel. This is one of the parallel connection. Last time हमने series देखा था in the ring. Series में कैसे connect करते हैं ring में? This is the first section. This is second section. This is third section. कैसे किया था? Now these are the connected in parallel. Okay? For both of them. So this is the यहाँ पे उन्होंने length दिया है, area दिया. This is the area of cross section of the first one. Area of cross section for the second. Okay? And in between दोनों के बीच में, this is the combine ना, दोनों के बीच में combine. ये section part 1 को भी connected है, ये section part 2 को भी connected. So this is the combined part. तो यहाँ पे the wire is bounded. The wire is bounded. From this wire the current is flowing. तो यहाँ से current flow है मतलब magnetic flux यहाँ से start. So magnetic flux यहाँ से start हुआ and at this point it get divides. यहाँ पे जगह 5 ohm, यहाँ पे जगह 5 ohm. So what is the concept in the electrical magnetic circuit? The flux divides into flux 1, flux 2. अभी यहाँ पे दो connected इसके लिए दो. अगर 3 connected होते तो 5 1 5 2 5 2. 4 connected होते तो 5 1 5 2 5 2. So in the parallel magnetic circuit, we can say the magnetic flux get divided. So let's see the theoretical part. So this is the introduction. That is the parallel magnetic circuit. And क्या दिया है? Magnetic circuit which has a more than one path for a magnetic flux. एक ही path होगा तो 5. ये series में था कि series में एक ही circle है तो same flux सबको है. लेकिन यहाँ पे there are more than one path. यहाँ पे दो sections connected है. It's a 5 1 and 5. So magnetic circuit which has a more than one path for magnetic flux is called as a parallel magnetic circuit. क्या बोला है? The magnetic circuit which has a more than one path for magnetic flux is called as parallel magnetic circuit. So कितने path है? दो path है because we have two circuits, phi 1 and phi 2. ठीक है? Next, let us consider a magnetic circuit is showing figure. ये नीचे दिया. At point A, total flux phi is divided into two parts, phi 1 and phi 2. तो देख लेते हैं. Point A पे उन्होंने बोला कि divide हो रहा है. So at a point A divide हो रहा है. Seriously, this is the point A. ये point पे divide हो रहा है. Left side में this is phi 1, right side में this is phi 2. तो divide हुआ ना. Same यहाँ पे junction है. यहाँ पे current divide हुआ I1 and I2. So this is part 1. वहाँ से phi 1 flow है. This is part 2. यहाँ से phi 2 flow. That is the magnetic flux. So let us consider magnetic circuit as shown in figure. At point A, the total flux phi is divided into two parts, phi 1 and phi 2. So what is the final one? KCL use किया तो, or we can say Kirchhoff's flux law, because KCL is the same as Kirchhoff's flux law. Last time distribution table में देखा था series and magnetic का कि electrical circuit में KCL है Kirchhoff's current law. तो यहाँ पे क्या है? Kirchhoff's flux law. तो क्या होगा? Total flux is equal to flux of first part plus flux of second part, same as I is equal to I1 plus I2. So this fluxes phi 1 and phi 2 have their paths completed through the ABCD and AFED. तो phi 1 कहाँ से जा रहा है? ABCD से. phi 2 कहाँ से जा रहा है? AFED से. So let's see एक बार देख लेते डायग्राम में. See this one. So ABCD यहाँ से क्या जा रहा है? phi 1. AFED यहाँ से क्या जा रहा है? That is phi 2. So phi 1 from ABCD, phi 2 from AFED. ठीक है? जब डायग्राम में जो कुछ होती है उसका एक्सप्लेनेशन जस्ट थ्योरेटिकल है. And this is similar to division of current in case of parallel connection of two resistors in an electrical circuit. तो ये क्या है? ये same as two resistors connected in parallel. सर यहाँ पे resistor की जगह पे क्या है? We have the magnetic circuits with the magnetic material. This is a parallel circuit. So phi is equal to phi 1 plus phi 2. And then उसके बाद we'll see the what is the serial magnetic circuit का comparison. Okay? Now just go through this one. Any doubt in the diagram and theoretical part? Anyone? कुछ भी doubt होगा diagram and theoretical part में तो पूछो. Here chat box you can ask the doubt. Okay? चलो. So let's go through it. एक बार go through करो इसको. Notes भी मैंने दिया है classroom पे. Just go through it and in the chat box you can write parallel magnetic circuit is clear. कुछ डाउट नहीं होगा तो you can write the statement.
कुछ डाउट होगा स्पेसिफिकली, just write it down in the chat box, we'll discuss. Okay, sure. So go through the theoretical part. This formula phi is equal to phi 1 plus phi 2. Diagram, कुछ भी डाउट होगा तो use the chat box, else in the chat box just write parallel magnetic circuit is here. Sure. तो कृष्णा ने लिखा है that is a parallel magnetic circuit is clear. Good. There are only 9 students. Okay, बाकी सब कहाँ पे गए? There are more than 50 students ना holidays के लिए. So उनका also there, साइश ने लिखा है, तुषार ने लिखा है. Good. उसके बाद we'll see what is the difference between series and parallel. Series and parallel में क्या difference है? Series magnetic circuit, parallel magnetic circuit. Sorry, तो ने भी लिखा है. Good. Aisha so there. So no doubt the parallel magnetic circuit. Sure. Sure. So those who are absent or those who are busy in celebrating the festival, they can join this lecture afterwards. Okay, no problem. So no problem. Sure. Now we'll focus on difference between series and parallel. इन दोनों में क्या difference है? अगर एग्जाम में आया कि compare the series and parallel magnetic circuit, distinguish between the series and parallel magnetic circuit, तो क्या लिखूं? सबसे पहले definition लिखो दोनों का. मैंने दोनों का definition ऊपर दिया है. If you go through the definition एक बार देख लेते हैं. दोनों का definition that is your first one. तो ऊपर दिया है इसको लिए कंटिन्यू लिखना. So definition एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे definition. So you can go through the definition. Series का दिखा दो सबसे पहले. So this is the definition for the series magnetic circuit. So here definition as it is written. Comparison point. Okay. For the parallel, this one is the definition. You can frame your own. At the end, concept should be clear from the definition. तो आप खुद का भी definition लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी problem नहीं है. लेकिन from the definition, the examiner can understand. हाँ, उसको पता चल गया कि parallel magnetic circuit क्या होता है. Okay, so you can follow this two definition. उसके बाद first point is clear. The first point उसमें लिखना था कैसे definition. उसके बाद you can draw the magnetic circuit diagram. So you can draw series magnetic circuit, parallel magnetic circuit. तो क्या draw कर सकते हैं उसके बाद? You can draw series and parallel magnetic circuit. तो क्या? So you can draw this one. You can draw this diagram for the distinguishing. Okay. So for the series you can draw this diagram. Practice करो ये diagram का. Okay. Exam में आ सकता है. For the parallel you can draw this one. You can draw this one. तो इसका practice करो. Okay. ये होगा second point. Third point, you can draw equivalent electrical circuit diagram. तो series magnetic circuit electrical में draw किया तो किससे होगा? Parallel magnetic circuit electrical में किससे होगा? You can write the third point कि same electrical diagram के same. यहाँ पे हमने दिया है. So this is series electrical circuit diagram. You can draw this one. Comparison point. For the parallel, you can draw this one. Equivalent electrical circuit. Okay. Then. फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया फ्लक्स. इस सीरीज में फ्लक्स क्या होने वाला है, पैरेलल में फ्लक्स क्या है. सी सीरीज में क्या होता है, करंट इज सेम ना. ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में था, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, करंट इज सेम एज फ्लक्स. तो यहाँ पे क्या सेम होगा, दैट इज फ्लक्स. सो हियर द सेम फ्लक्स इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट. सो फाई इज इक्वल टू फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू फाई 3. तो जितने भी होंगे कनेक्शन सेम. सो आई इज इक्वल टू आई 1 आई 2 आई 3 सेम. फाई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 फाई 3. ये पैरेलल सर्किट है ना. पैरेलल में क्या होता है, करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2. दो सर्किट हो गए तो दो तीन हो गए, I1 प्लस I2 प्लस I3. So here the total flux is the addition of all flux present in the circuit. So phi is equal to phi 1 plus phi 2. Same. This is a fourth point. Fifth point क्या दिया है कि total MMF. See, series circuit में क्या होता है, voltage which is EMF is different ना. सीरीज में क्या सेम होता है, करंट. क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज. वोल्टेज को हम लोग कैसे लिखते थे,
V is equal to V1 plus V2 plus V3 ना. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? Voltage which is EMF. EMF को magnetic circuit में क्या लिखते हैं? That is MMF. So we can say MMF, that is a force, is equal to F1, F2, F3. Say V1, V2, V3. So series circuit में voltage is different. So that's why we do the addition. And in the magnetic circuit में the magnetomotive force is a different. So F1, F2, and F3. Same parallel circuit में क्या होता है? Current is different, but voltage is same. So V is equal to V1 plus V1 is equal to V2. So parallel circuit में voltage is same. The voltage is same as EMF. तो MF को कैसे रिप्लेस करना है? MMF. MF का नोटेशन क्या दिया यहाँ पे? F. F is equal to F1 plus F2. खत्म. So करंट को रिप्लेस करो फ्लक्स से, वोल्टेज को that is EMF को रिप्लेस करना है मैग्नेटोमोटिव फोर्स से. बस बाकी कंसेप्ट से. ठीक है. एंड द लास्ट वन that is a reluctance. तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? टोटल रेजिस्टेंस R1 plus R2 plus R3 up to infinity. तो यहाँ पे रिलक्टेंस कैसे होगा? रिलक्टेंस इज सेम एज रेजिस्टेंस इन द मैग्नेटिक सर्किट. S is equal to S1, S2 and S3 इन सब का एडिशन. पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to infinity. तो यहाँ पे क्या होगा? 1 upon S is equal to 1 upon S1 plus 1 upon S2 plus 1 upon S3. सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कॉपी किया. So this is a comparison of current. यहाँ पे फ्लक्स है. This is comparison of EMF. यहाँ पे MMF है. This is comparison of resistor. यहाँ पे reluctance. बस. If we have the concept of series and parallel electrical circuit ना, तो ये concept clear हो गया. So any doubt in this series and magnetic circuit? तो एग्जाम पूछा compare series and magnetic circuit for the 4 marks. तो ये सब लिखना है. Okay? ये at the end सब लोग टाइम नहीं मिला. टाइम बहुत कम है. We can skip this part. ये पार्ट स्किप कर सकते. लेकिन बाकी फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, 6 ये सब लिख. तो एटलीस्ट 4 पॉइंट इज रिक्वायर्ड. 4 पॉइंट एटलीस्ट 4. उसमें से डायग्राम एंड डेफिनेशन तो आने दो. ये 2 पॉइंट तो कंपल्सरी आने ही चाहिए. बाकी यू कैन गेट एनी 2 फ्रॉम दिस वन. लेकिन मैक्सिमम 5 लिखो. 5 to 6. ये भी लिखा तो चलेगा. और यू कैन फाइंड कुछ और पॉइंट आपको पता होगा. यू कैन गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स. नॉट सिर्फ 5. So just go through the series and parallel magnetic circuit. First part is the definition. Second is diagram of magnetic circuit. Third is a diagram of electrical circuit. Fourth one is a flux comparison. Next thing MMF comparison and the reluctance comparison. Okay, just go through it. So you can write in a chat box that is a comparison is clear. क्या लिखना है? Comparison is clear. कुछ भी डाउट होगा तो पूछो. You can write in a chat box. Else you can write comparison is clear. ठीक है, चलो बता. So if you have any doubt, you can ask. Else in the chat box you can write comparison is clear. तो सिंपल कंपैरिजन. ओके, चलो. तो किसने लिखा है? मंदार, रचित, करण, कृष्णा, आदित्य, बाकी सब लोग. So any doubt? So Gaurav is there, Chinmay is there. Good. So let's start the next question. So next question is knowing a BH curve. B और H का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. Okay, on y and x axis. So next concept is known as a BH curve. Okay. So everyone knows what is B. B क्या होता है? That is a magnetic flux density. This is B. And what is H? This is a magnetic field strength. Is H. तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे.
Get a 0, दोनों का वैल्यू कितना है, at 1 वैल्यू कितना है, at 2 वैल्यू कितना है. So we need to draw the plot graph for the BH. Okay, so what is the BH curve? Is a graphical representation of relation between flux density, that is B, and applied field strength H, where H plotted on the x-axis, B plotted on the y-axis. Okay, तो ये छोड़, ये तो hysteresis है. Okay, ये मत ड्रॉ करो. Focus on this one. यहाँ पे फोकस करो. Okay, this one. देखो यहाँ पे x एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया h, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. व्हाट इज यूनिट? एम्पीयर टर्न्स पर मीटर. y एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है b, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर. सो कोई भी एक मेटल उन्होंने लिया होगा, कोई भी एक मटेरियल उन्होंने लिया होगा. फॉर दैट मटेरियल ये पॉइंट पे व्हाट इज bh? राइट नाउ इट्स 9 am. सो bh कितना है? 910 को bh कितना, 920 को bh कितना. So they count the value of BH, then plot it. Okay, so उनको क्या ग्राफ मिला? They got this graph. ये कर्व उनको मिला. तो यहाँ पे we'll study 3 points. Point A, point B, this knee and saturation. इन तो 4 पॉइंट स्टडी करेंगे. So BH को क्या है? We should write this definition. It is a plot. It is a graphical representation between B and H. The H is plotted on x-axis, B is plotted on y-axis. ठीक है. नाउ कंसीडर एक्सप्लेनेशन कि ये क्या है, ए बी नी सैचुरेशन क्या होगा. ठीक है, लेट्स सी एक एक पॉइंट. सो फर्स्ट उन्होंने बोला रीजन ओए. ठीक है, ये नीचे वाला देखो. तो बीएच को कैन बी डिस्क्राइब बाय डिवाइडिंग इनटू 3 रीजंस. क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन इज O to A. सो O. नाउ दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है. ठीक है, सो वी कैन कॉल दिस पाथ इज अ लीनियर. लीनियर मतलब साइमल्टेनियसली एच भी बढ़ने वाला है, साइमल्टेनियसली बी भी बढ़ने वाला है. Both are increasing. So we can say this line O to A is linear. H भी बढ़ने वाला है रीजन में, B भी बढ़ने वाला है. So what is the region OA? From zero current, this is zero. H is zero and B is also zero. At a 0 point, ये point पे देखो, B भी zero, H भी zero, दोनों start हुए क्या नहीं. So for zero current, H is zero and B is also zero. ठीक है. उसके बाद both are increasing, B and H both are increasing. So the flux density is then increases gradually as the value of H increase. However, B changes slowly in this region. So initially इस straight line जैसे, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व ऐसे ऐसे थोड़ा सा बेंड. So we can see कि B and H simultaneously increase हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद B का स्पीड कम होगा. The speed of B is a decrease. थोड़ा स्लो होगा. Initially same था as compared to H, लेकिन उसके बाद it becomes slow. So what is the reason? वो देखेंगे. So उन्होंने क्या लिखा है रीजन O to A में? If for zero current H is zero, B is also zero. The flux density B is then increases gradually with the value of H. However, the B changes slowly in this region. तो initially दोनों zero थे, उसके बाद दोनों बढ़ने वाले, लेकिन after some time B का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो. That is the region O. ठीक है. तो ये चैट बॉक्स जस्ट मेंशन इन डाउट कुछ होगा तो देन विल सी द नेक्स्ट पेज. ठीक है. सो क्या करना है, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम. मैं इसको थोड़ा साइज छोटा करता हूं सो यू कैन सी एवरीथिंग. ठीक है. तो क्या करना है, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ बीएच का दिस डायग्राम. दिस डायग्राम, नॉट दिस वन, ये छोड़ दो, नॉट दिस वन. सो फॉलो दिस डायग्राम एंड द रीजन ओ. ठीक है. जस्ट गो थ्रू द रीजन पर, इतना देख लो, 3 points. So the definition, this diagram part and this region code. So if you have any doubt, you can ask me. Else in the chat box you can write region O is clear. And then we'll see region A to B. तो region O में क्या है? Initially both are zero, उसके दोनों बढ़ रहे. After some time ये ध्यान में आया कि B का स्पीड थोड़ा स्लो होने वाला है. The speed of B now is slow, थोड़ा डिक्रीज हुआ. ठीक है. If you have any doubt in the BH curve definition, diagram and the region, just write. Else you can write the region O is clear. And then उसके बाद लिखेंगे region AB and then saturation. Sure, finish it. So any doubt in the chat? कुछ भी doubt है तो chat box use करें.
Any doubt? Anyone? Clear सबको? Sure? का? सबने लिखा region OA is clear. So मंदार, ओमकार, कृष्णा, रचित, आदित्य, मेहर. मेहर अभी ज्वाइन किया ना आपने? मुझसे ऑफलाइन नेक्स्ट में कहा थे आप? Sounds clear कितने? Parmi also there. Sure. So any doubt? Anyone? So Nandini also there. So let's start. Next, let's see the next one, that is the region OB. So we zoom कर. This is the AB. This is the region AB. यहाँ पे क्या दिख रहा है से? Initially this is value of H and this is the value of H at point. यहाँ पे B देखो और यहाँ पे B देखो. तो क्या पता चल रहा है कि H का वैल्यू कैसे बढ़ा देखो और B का वैल्यू कैसे बढ़ा. ठीक. Let's see. Theoretical में क्या लिखा है? Then we'll see the explanation. In this region, for small change in H, there is a large change in B, and BH is almost linear in this region. क्या बोला मैंने? कि for small change in H, there is a large change. कि थोड़ा सा H change हुआ तो B ज्यादा change होगा. आपने एक प्लांट देखा होगा. I don't know उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. कि उसको अगर मैंने टच किया, थोड़ा सा टच किया, पूरा वो क्लोज हो जाता है. तो मैंने तो कुछ किया नहीं ना, सिर्फ ऐसे नॉर्मल टच किया तो पूरा क्लोज हो गया. So this is more sensitive. Same. यहाँ पे देखो at point E, this is of H, at point B, this is of H. इतना चेंज हुआ, बहुत छोटा चेंज हुआ है ना. लेकिन B का देखो at point A, this is your magnetic flux density, and at point B, this is your magnetic. ये चेंज बहुत ज्यादा है. So for the small change in H, there is a large change in. This will look like a straight line, थोड़ा सा curve. This we can say linear. H बढ़ रहा है, so B also increases. Okay. So for small change in H, there is a large change in. So what you write in this explanation, the region AB में for small change in H, H थोड़ा सा ही change हुआ. Okay. So for small change in H, there is a large change in. So this is linear graph. Linear का मतलब ये नहीं होता है कि H अगर 10 से बढ़ रहा है तो B भी 10 से बढ़ जाए. Not necessary. See, H is equal to 2B. This is also linear. H is equal to 7B. This is also linear. लेकिन डबल से बढ़ रहा है, ये 7 से बढ़ रहा है. ठीक है. So not necessarily linear मतलब same to same बढ़ना चाहिए. Not necessary. Both are increases now. So that is linear. So for small change in H, there is a large change from A to B. ठीक है. ये उन्होंने explanation में. And you can also go through the diagram. So for small change H, large change B हो रहा है. So what is the region AB? In this region, for small change in H, there is a large change in B. The pH curve is almost linear in this region. Okay? Now go through the diagram and the region AB का explanation. थोड़ा सा देख लो. Region AB का explanation this one. This one, this section. This section. Okay? Now ये बहुत छोटा है. This is greater. So for small change in H, there is a large change in B. Okay? Just go through region AB. तो कुछ भी डाउट होगा तो पूछो. Else in the chat box you can write region AB is clear. Then उसके बाद देखेंगे कि B के बाद क्या है. ये knee क्या होता है, saturation क्या होता है. Okay? It's look like knee shape. That's why it's one of them. उसके बाद last section क्या है, that is beyond B. O2A देखा, A2B देखा. No, beyond B. B के आगे क्या होता है. ठीक है. So any doubt you can ask in the chat box. Else you can write region AB is clear. So any doubt anyone? Sure? पक्का? So let's say the chat box push reply to me.
So mostly सबने लिखा है region AB is clear. So ओमकार, रचित, आदित्य, राम, कृष्णा, मंदार, दिशा, मेहर, वैशाली, साइश, वैशाली आपका ज्वाइन किया ना? चलो. So region AB सबका clear है. Then we see region beyond B. B के आगे क्या होगा? Okay. Sure. So region beyond B. See B के बाद क्या होने वाला है? It's look like a niche. ये saturation क्या होगा? Okay. First we'll see the explanation. जो लिखा है theoretically, उसका थोड़ा देखेंगे. After the point B, the change in B is small, even for the large change in H. कि B का अगर थोड़ा ही change होगा, for the large change in H, मतलब इसका totally reverse होगा. ठीक है? Let's see the diagram. See B point के बाद देखो, ये B point और ये last point. यहाँ पे H देखो, कितना change हुआ? लेकिन यहाँ पे देखो, for this point and for this point. What is the change in B? B is very small. The change in B is very small. So we can make a reverse statement. जो statement AB में बनाया था उसका reverse. If for a large change in H, there is a small change in B. क्यों change नहीं हो रहा है? Because B is in a saturation point. इसके आगे B बढ़ नहीं सकता. इसके लिए capacity नहीं B का इतना इसके आगे बढ़ने. Capacity of B is full. That is known as saturation. Saturation मतलब क्या होता है? कि यार मैं saturate हो गया. मतलब battery down. इसके आगे मैं चल नहीं सकता. If there is a running race of 20 किलोमीटर मैराथन है, लेकिन आपकी कैपेसिटी 10 किलोमीटर की है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हो गया, खत्म, इसके आगे मेरे जाने की कुछ भी कैपेसिटी नहीं, थक गया मैं. दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट. इसके आगे जा नहीं सकते. सो फॉर एवरी कंपोनेंट, फॉर एवरी मटेरियल देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट. इसके आगे वो जा नहीं सकते. दैट कांसेप्ट इज नोन एज सैचुरेशन. वी आर इन अ सैचुरेशन मोड. बस हो गया, इसके आगे कुछ करो ना. लेक्चर में बोलते हैं ना आप लोग कि सर बस हो गया. तो बस हो गया मतलब क्या? कि यू आर इन अ सैचुरेशन मोड. इसके आगे कुछ समझ में आने वाला है, स्टॉप करो लेक्चर. ठीक है? दैट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट. इसके आगे भी बढ़ने वाला नहीं. H कितना भी इंक्रीज करो, there is no use. If you increase H also ना, H होगा लेकिन B प्लॉट नहीं होगा. That's why this point is known as saturation point of B. So from B to this point, H is increases large, but B का increase बहुत small है. ठीक है? This is last point. एक बार रिवाइज करते हैं. O2 है, both are increases simultaneously, लेकिन यहाँ पे थोड़ा B का स्पीड थोड़ा कम होगा. Then A to B, B increase faster than H, and B to saturation point, B का increase थोड़ा कम as compared to H. So this is known as saturation point. This shape is known as knee shape. थोड़ा सा bend है तो knee जैसे दिख रहा है. So knee shape. That is known as saturation point. Okay? So just go through the saturation point का description. So यहाँ पे क्या लिखा है? Region beyond B, after the point B, the change in B is small, even for the large change in H. That is known as saturation. This is the region. ये रीजन में H का वैल्यू कितना बहुत बड़ा है, चेंज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू B. यहाँ पे चेंज बहुत छोटा है. ठीक है? जस्ट गो टू द रीजन बियॉन्ड B. सो इफ यू वांट इट आउट यू कैन आस्क. तो ये नी पे लिखा है बिकॉज़ इट शेप इज नी. सैचुरेशन मतलब इसके आगे B बढ़ने वाला नहीं, बस हो गया. यू कैन गो थ्रू दिस नाउ. यू कैन राइट रीजन बियॉन्ड B is clear. In the chat box, you can write region beyond B is clear. Then let's see the next part. So कुछ भी doubt होगा तो you can ask me. Else you can write region beyond B is clear. So any doubt anyone? Feel good after? देख लो एक बार.
चलो तो मोस्टली सबने लिखा है इस परम कृष्णा रचि ओंकार वैशाली साइश निशा मेयर नंदिनी। गुड। अभी 17 हो गए, उड़ गए 9:30 बजे उड़ गए सब। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। फैराडेज लॉ के इंपॉर्टेंट है, दोनों देखेंगे आज फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे देखो आगे ठीक है, फाइनली द BH will tend to parallel to x axis and the region is called as saturation। मतलब क्या पॉइंट है कि नेक्स्ट लाइन क्या है कि फाइनली क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा इंक्रीज इन सैचुरेशन। उसके बाद क्या होगा, सैचुरेशन के बाद कितना भी H इंक्रीज करो, यहाँ इसका मीन क्या है कि फाइनली द BH will tend parallel to x axis, this region is called as saturation region। तो बता देता हूँ इसके बाद H कितना भी इंक्रीज करो, इसके बाद यू कैन इंक्रीज H फॉर एनी पॉइंट। उसके बाद B तो सेम है, B चेंज होगा ही नहीं। इसके बाद क्या होगा, ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे होगा कि B का वैल्यू क्या है, स्टेबल, B इज स्टेबल, लेकिन H इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे H कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो, तो वी कैन से द ग्राफ इज पैरेलल टू x axis। As B reaches to saturation point, it never change, it will be same, but H is changing continuously, so the graph is parallel to x axis। ये ग्राफ और this x axis both are parallel। So at saturation region क्या होता है, the graph is parallel to the H because the value of B is not changing, it's remain constant। ठीक, वही उन्होंने दिया, you can write this sentence, okay। तो थोड़ा एडिटिंग में नीचे ऊपर हुआ, that's why next page पे shift, okay, you can write this statement also। saturation region क्या होता है, जहाँ पे B का वैल्यू चेंज नहीं होगा, it remain constant and BH curve will tend to parallel to the x axis, okay, this is called saturation region। Let's see the next one, that is the Faraday's law of electromagnetic induction। Okay? It's also known as the Faraday's law of EMI, that is electromagnetic induction। Shortcut क्या है यहाँ पे, EMI। Okay? So electromagnetic induction याद रखो। So what is the first law? First law क्या बोला, याद है एग्जाम में कि what is the Faraday's law? क्वेश्चन पूछते हैं कि state Faraday's first law, state Faraday's second law, क्वेश्चन आने वाले। So let's see the first law। The Faraday's first law is whenever a changing magnetic flux linking with the conductor, EMF is induced in the conductor। मतलब क्या, see, मेरे पास एक मेटल है, this is one metal, तो यहाँ पे मैंने एक वायर कनेक्ट किया, वायर बाउंड किया, मैंने चेंज कलर, मैंने यहाँ पे वायर बाउंड किया और यहाँ से करंट इज फ्लो। तो करंट फ्लो है मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स भी फ्लो होगा। पहले से डॉटेड लें बिकॉज़ दिखता नहीं, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, वी हैव वन मेटल, यहाँ पे वायर बाउंड किया, द करंट इज फ्लोइंग, ड्यू टू द करंट इज फ्लोइंग देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उन्होंने क्या बोला, व्हेनेवर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस इन दैट कंडक्टर। तो अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, राइट नाउ इट्स स्टेबल, कंटिन्यूअसली 50 वैल्यू का फ्लक्स इज स्प्रेड, लेकिन 60 हुआ, 40 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 100 हुआ, दैट मींस इट्स चेंजिंग। नाउ दैट चेंजिंग डज नॉट मीन कि बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, इट शुड बी चेंज। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है वो चेंज हुआ, ईएमएफ इन दैट इंडक्टर गेट इंड्यूस, और एक ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा। जिसने ये करंट प्रोवाइड किया है, जो वोल्टेज है वो तो डिफरेंट ही पार्ट है, कि यहाँ पे मैंने एक सप्लाई लगाया बैटरी, वो तो डिफरेंट ही है। ड्यू टू द फ्लक्स देयर इज इंड्यूस इन द ईएमएफ, देयर इज इंड्यूस ऑफ ईएमएफ। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, देयर इज अ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, देयर इज इंड्यूस ऑफ ईएमएफ इन द कंडक्टर। एक ही स्टेटमेंट में दिया, ओके, व्हाट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ? सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल and EMF is induced in the conductor. So exam they will ask you state Faraday's law of electromagnetic induction. So you should write both the one, first and second. The first क्या है, that is the whenever a changing magnetic flux linking with the conductor, EMF is induced in the conductor. Extra EMF is induced in the conductor. Supply तो different part है, जो supply मुझे current देने वाला है and the current will give the flux, ये तो different ही है, extra EMF in the induced in the circuit. So that's why we use inductor ना। इंडक्टर क्या होता है, टू इंड्यूस ईएमएफ, और ईएमएफ कहां से आया, फ्रॉम द फैराडेज फर्स्ट लॉ।
फैराडेस ने क्या लाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसकी वजह से वो इंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द जॉब ऑफ इंडक्टर, इट इज यूज्ड टू इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ कहां से आने वाला है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इंडक्टर इज यूज्ड टू इंड्यूस ईएमएफ, और वो ईएमएफ कहां से आ रहा है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। What is Faraday's first law? Whenever changing magnetic flux linking with the conductor, an EMF is induced in that conductor. That is the first law. Okay? This goes with the first law. Chalo. If you have any doubt, you can ask me. Or again, revise karne to bolo. We'll take one more time. Else, you can write Faraday's first law is clear. Okay? Sure. And then we'll see the second law. चलो जल्दी. So we'll see the second law and then we'll stop. तो सेकंड लॉ थोड़ा सा बड़ा है. फर्स्ट लॉ कुछ नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दी. सेकंड लॉ में देयर इज अ सम्स आल्सो, देयर इज अ सम फार्मूला आल्सो. ऑन दैट फार्मूला वी कैन सॉल्व सर. तो फैराडे's सेकंड लॉ थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज़ देयर इज अ एक्सप्लेनेशन. You can write in the chat box that is Faraday's first law is clear. So Aditya, Omkar, Disha, Taram, what about others? Sure. Saish, Mandar, Parikshit, Nehar, everyone. Good. Then Krishna. Good. Sure. So let's see the next concept, that is the Faraday's second law. First one is sentence and then explanation. Okay. So what is the Faraday's second law? तो सेकेंड लॉ उसने क्या बोला है कि फर्स्ट लॉ ने आपने पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसकी वजह से इंड्यूस होता है ईएमएफ. तो ये ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू फाइंड आउट किया बाय सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से देयर इज ईएमएफ. लेकिन ये ईएमएफ का वैल्यू कितना है, ये किसने पता है, सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ ने बताया कि देयर इज वन पर्सन, देयर इज वन क्वांटिटी दैट इज ईएमएफ. लेकिन ईएमएफ क्या है, उसका वैल्यू कितना है, तो कौन बताने वाला है, दैट इज सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ विल टेल यू द वैल्यू, द मैग्नेट्यूड. चलो लेट्स सी. सो Faraday's second law. तो व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पे लास्ट में था, यहाँ पे फर्स्ट में है. ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस. तो जो कुछ फ्लक्स था वो कितने से चेंज हुआ, उसका रेट इज प्रोपोर्शनल विद मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ. मतलब ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. तो ये फ्लक्स ये चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू रेट टाइम, सो ये dt एंड d अपाई. तो कैसे होगा, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द d phi अपॉन dt. सो व्हाट इज द d phi एंड dt? d phi मतलब द फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके ऊपर डिपेंड है ईएमएफ. So this is a statement and this is your formula. So magnitude of induced EMF, that is EMF, is directly proportional to the rate of change of flux linkage, d phi upon dt. Okay. So let's take the condition. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है कि फ्लक्स लिंकेजेस क्या होता है. फ्लक्स तो पता है मुझे कि इट्स अ फाई, लेकिन फ्लक्स लिंकेजेस क्या होता है कि फ्लक्स लिंकेजेस इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. कितने टर्न से कॉइल के, this is first turn, second turn, third turn, fourth turn, fifth turn. This is capital N, number of turns. And this is a phi. So what is the flux linkages? Phi, flux into number of turns. ये फॉर्मूला को याद रखो. फ्लक्स लिंकेज क्या है? It is a flux into number of turns of the coil. Let's consider मेरे पास दो फ्लक्स है. So consider a coil having n turns. उसका इनिशियल फ्लक्स क्या था, बिकॉज फ्लक्स अभी चेंज करना है ना, इनिशियल फ्लक्स कुछ भी होगा, उसके बाद उसको चेंज करेंगे. So let's consider flux is 1 5 bar. So what is statement? Consider a coil having n turn.
उसके पास कितने कॉइल है, कॉइल का टर्न्स है n, ऐसे टर्न्स। इनिशियल फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज अ फाइबर। तो इनिशियल फ्लक्स क्या है, फ्लक्स लिंकेजेस क्या है, दैट इज अ फाइबर। सो व्हाट इज द फार्मूला इनिशियल फ्लक्स लिंकेजेस, कि फ्लक्स कितना है फाइबर एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, सो वी कैन से इट्स n फाइबर, n आगे लिखा है फाइबर बाद में, चलिए। सो इनिशियली फ्लक्स क्या था फाइबर, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, सो व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स लिंकेजेस n5। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम इंटरवल t, फ्लक्स चेंज हुआ, due to some region flux, due to some reason the flux get changes, so flux linkage with the coil changes from phi 1 to phi, तो उसके बाद phi 1 चेंज हुआ phi 2 से, तो what is the final flux linkage, flux into number of turns, it's n phi 2, so क्या आया, that is the flux linkages, that is n phi 2। ये पता चला इनिशियल क्या था n phi 1, उसके बाद क्या है n phi 2, उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट। मैंने बोला कि रेट कैसे डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग बोलते हैं अभी मैंगो का रेट कितना है, ऐसे पूछना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैंगो, व्हाट इज द रेट ऑफ मैंगो, इसका मतलब क्या है एट दिस टाइम मैंगो का रेट कितना। अगर मैंने यही स्टेटमेंट 2 दिन के बाद पूछा तो वैल्यू चेंज होगा ना, क्यों, टाइम चेंज हुआ। सो व्हेनेवर देयर इज अ रेट दैट मींस इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ शेयर, तो शेयर्स का वैल्यू 200 रुपए, तो मैंने स्टेटमेंट कल पूछा तो बिकम 300 बिकॉज टाइम चेंज हुआ। तो सेम ना, इनिशियल इट्स अ phi 1, आफ्टर सम टाइम इट्स अ phi 2, व्हाट इज द रेट, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज किसे फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियल क्या था n phi 2, उसके बाद क्या है n phi 2, सो इनिशियल क्या था n phi 1, उसके बाद n phi 2, दोनों का डिफरेंस दैट इज टाइम। तो रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय टाइम, कितने से बढ़ गया वो पता चलना चाहिए ना। So final value minus initial value divided by time. That is known as the rate of change. तो किसका है, फ्लक्स लिंकेजेस का। So n phi 2 minus n phi 1 upon t. Okay? तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, according to Faraday's first law, EMF will get induced in a coil. According to the second law, magnitude of EMF is proportional to the rate of change of flux linkage. तो फर्स्ट लॉ ने क्या बोला है कि EMF इंड्यूस होगा, कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, ये फर्स्ट लॉ ने बताया। सेकंड लॉ ने क्या बताया, the magnitude of EMF is proportional to the rate of change of flux linkage, तो इसको प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट लॉ ने बताया कि EMF ऐसा कुछ तो होता है इंड्यूस EMF, तो सेकंड लॉ ने उसका वैल्यू बताया, मैग्नीट्यूड बताया by using this one। Let's see the last one। So we can see this induced EMF is directly proportional to the n phi 2 minus n phi 1 divided by 2 as per the second law, this is by second law। उसके बाद ये तो सेम है, I think double copy, just wait। So अगर मैंने यहां से कुछ कॉमन निकाला, E is proportional to n is common ना, phi 2 minus phi 1 divided by 2, दोनों में n is common, मैंने कॉमन निकाला, उसके बाद E is proportional to n divided by 2, phi 2 minus phi 1 ऐसे ना, तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो इन दोनों को चेंज हो गया ना, टाइम भी चेंज हो गया, दिस इज फाइनल टाइम, दिस इज द फाइनल टाइम। इनिशियल टाइम t1 था, उसके बाद टाइम t2, इट्स आल्सो t, so we can say what is the change in flux, the change in flux is d phi, what is change in time, it is dt। so this is a final step, okay, तो ये मत लिखो, just make a changes after this one, just write down this one, this is your first, this is your second, then write this third one, and the last में क्या होगा, the proportion sign open होगा, and there is a constant that is k and d phi quantity, okay, फिर से बता दो, do not write this one, ये तो सेम है। तो इसके बाद क्या लिखना है, E is proportional to, तो यहाँ पे n is a common ना, तो मैंने कॉमन निकाला, it's the same, so phi 2 minus phi 1 and this is t, ये t मतलब क्या है, it's a time 2 minus time 1 ना, तो we can write यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो गए, phi भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया, so it's a d phi upon dt, तो d phi मतलब क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, dt मतलब चेंज इन टाइम, एंड देन उसके बाद ओपन का, ये प्रोपोर्शन साइन ओपन होगा तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज अ k,
Okay? This is your constant. It's a constant number of turns change in flux with respect to time. Okay? This follow, इसको follow करो. Then क्या बोला? In SI unit, d5 quantity is Weber per second, E is volt. And then constant couple of K becomes unity. तो ये मोस्टली वैल्यू होता है, K is constant ना, it's a value. Just go with this one. यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. It's not that much useful. तो कैसे वो है पता चला? E is equal to K and d5 upon dt. Anyone? Any doubt? Sure? Okay. एक बार नीचे कुछ दे रहे देख लेते. अगर मैंने एक K का वैल्यू 1 assume किया, if I assume K is 1, so what will find formula? E is equal to n d5 upon dt. So if I assume K is equal to 1, let's say E is equal to n d5. Sure? एक बार अच्छे से देख लेते हैं पूरे पेज का. नहीं आएगा ना एक पेज पे. I'll make it 70. Yeah. Still I'll make it 65. Still let's make it 60. Let's say 55. ठीक भी आ गया. तो जस्ट जूम इट. ओके, थोड़ा जूम करो. नहीं होगा लेकिन आपके पास नोट्स होगा, उसको खोलो. ओके, तो आपको यही लिखना है फैराडेज सेकंड लॉ, एवरीथिंग. दिस इज द स्टेटमेंट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, these are the two cases phi 1 and phi 2. Okay, then this is rate. यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिखना है? ये ऐड करो यहाँ पे. You can take a common. E is proportional to n phi 2 minus phi 1 divided by 10. और यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम 1 is टाइम 2 minus टाइम 1. उसके बाद you can write E is proportional to n d5 upon dt. Then उसके बाद ये लिखना. When the value of K is 1, क्या आएगा? E is equal to n d5 upon dt. This is your final state. तो फैराडे सेकंड लॉ पूछा तो ये पूरा लिखना है, याद रखो. लिखना है, just go through it. तो स्टेटमेंट क्या है? The magnitude of the induced EMF E is proportional to the rate of change of flux linkage. तो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, उसको अगर मैंने n से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? फ्लक्स लिंकेजेस से. This is Faraday's second law. It will give the value of induced EMF. You just go through the Faraday's second law, push it down to the future. So after this statement, तो ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, लास्ट में. Then ये statement, यहाँ पे K का वैल्यू 1 assume की. ठीक है, push it down to the पूछो, else in the chat box you can write Faraday's second law is clear. 2-3 बार रिवाइज करो, just write it as a practice, then you get it clear. So the chat box you can write Faraday's second law is clear. So Mayor Shah, Disha, Aditya, what about others? So सबके पास नोट्स है, take a print out, बाकी सब xerox निकालो, print out possible नहीं होने तो, but you should have this notes as a hard copy. सबके पास hard copy इसका होना चाहिए. Okay, PDF से पढ़ो मत. You should have a hard copy. जो मैंने changes बताए, just make that changes. Okay. Yeah. So Gaurav, Mandar, then Saish, Krishna, Nandini. चलो, so एक लास्ट लेते हैं and then we'll stop. लेंस लॉ छोटा सी, इसका ही कंटिन्यूशन. So हमने फाइनाइट फॉर्मूला क्या देखा सेकंड लॉ का, दिस इज द फाइनाइट फॉर्मूला. लेकिन लेंस लॉ थोड़ा सा कुछ और ही बताने वाला है. तो फैराडे लॉ ने बताया कि दिस इज योर फाइनल आंसर. फैराडे ने बताया ये आपका लास्ट आंसर है, लेकिन लेंस ने थोड़ा सा चेंज किया. व्हाट इज द लेंस लॉ? लेट्स सी. ये भी आ सकता है एग्जाम में. व्हाट इज द लेंस लॉ? लेंस लॉ ने सेम फॉर्मूला यूज किया लेकिन कांसेप्ट थोड़ा उल्टा होता है. क्या?
The direction of induced EMF produced in electromagnetic induction is such that set up a current which always opposite that cause responsible for induced EMF. इसमें क्या बोला है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका डायरेक्शन अपोजिट ये उसने बोला. The direction of induced EMF produced by electromagnetic induction is such that it set up a current which always opposes the cause that responsible for induced EMF. कि ये induced EMF से जो कुछ भी करंट होगा प्रोड्यूस, because EMF क्या प्रोड्यूस करता है करंट ना, it will be always oppose, it will always oppose. So we can introduce a negative sign here. Oppose बोला ना, so the direction of induced EMF is always opposed by this current. So that means induced EMF is always opposed the cause producing it, which is represented by negative sign. तो induced EMF को जिसने प्रोड्यूस किया उसको अपोज करेगा. So induced EMF is always oppose the cause producing it, जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसको induced EMF अपोज करेगा. ओके, सो होता है ना ऐसे लाइफ में कि जिसको जिसने हेल्प किया उसके वो लोग धोखा देंगे, ऐसे होता है ना लाइफ में. तो सेम उसने लेंस लॉ ने बोला induced EMF को जिसने प्रोड्यूस किया उसके वो धोखा देने वाला. That is a negative sign. Oppose. तो अगर लेंस लॉ पूछा तो you can get this statement. Okay, and then write on this one. ये फॉर्मूला तो सेम है Faraday's second law. Only यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया because induced EMF अपोज करेगा. तो अपोज. तो रोबोट देखा ना मूवी सब में रजनीकांत का, तो रजनीकांत क्रिएटेड दैट रोबोट एंड दैट रोबोट अपोज करते हैं आगे में रजनीकांत को, जिसने जिसको बना वो उसको अपोज करता है. This is the E is equal to minus m d phi upon dt. So the induced EMF is always oppose the cause producing it. जिसको उसने प्रोड्यूस किया उसको अपोज करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन. तो जो फैराडे ने सेकंड लॉ ने बताया सेम है कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, बस इतना ही. दैट इज अ लेंस लॉ. ठीक, इस गो टू लेंस लॉ. एग्जाम पूछेंगे व्हाट इज द लेंस लॉ फॉर 2 मार्क्स इफ यू राइट दिस टू सेंटेंस एंड द फॉर. ठीक, चलो. सो एनीवन एंड आउट इन द लेंस लॉ कुछ भी नहीं. अपोजिट साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा इसको उसने प्रोड्यूस किया. किसने प्रोड्यूस किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंटी फ्लक्स में उसने प्रोड्यूस किया. सो यू कैन राइट लेंस लॉ इज क्लियर. एल्स कुछ डाउट होगा अगेन एक बार देखना है तो जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स. चलो फास्ट. So any doubt in the Lenz law? Anyone? Then we'll stop here. So Param लिखा है Lenz law is clear. What about others? Yeah, Omkar also there. Disha, Meher. What about others? तो है कि नहीं? Rakshit also there. Yeah. Now all of you just write your name in the chat box. Just write your name in the chat box. And जो लोग continuously active थे, जिन्हें continuously clear कुछ doubt है, कुछ मैंने आंसर आपसे एक बार किया तो जो दिया है, they only they'll get the attendance. Okay, just write your name in the chat box and then it's stop. So कुछ भी doubt होगा तो you can write in the chat box. So once we complete this chapter, I'll give the question bank. So for the unit test, I'll give the question bank for all the module. You can follow that question bank for the final exam also. Okay? एक बार ये module पूरा चले जाओ, तो exam को बहुत time लगेगा. I'll give the question for each chapter. कि ये chapter में से क्या-क्या पढ़ना चाहिए for the final exam. So you can refer for the unit test also. एक बार ये chapter में जाएंगे. 11-8 कौन से page पे भी है? 9th ना हो जाएगा. 12 is the last page. So within next lecture or next to next lecture हो जाएगा. उसके remaining chapter is very simple, छोटे-छोटे. So any doubt anyone? Just write in the chat box your name and then stop. कुछ भी doubt होगा तो पूछो. तो question में दिया तो सबका out of मिलना चाहिए. Out of क्या extra लिख के आना चाहिए. Out of that. I hope within 2 days or within 2-3 days I will give the question bank. उसके बाद आपके पास 10 दिन होंगे to study. नोट्स मैंने पहले से सिलेक्ट किया, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तब से मैंने दिया नोट्स. आई होप एवरीवन इज गुड आउट ऑफ. ठीक है, सो एनीवन इन डाउट?
Sure. So let's stop here. Okay. Sure. Let's stop here. Chalo, bye.